हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 13 की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121 टू 130। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 120 MCQs एंड एक्सप्लेन देम फॉर यू। आई होप आपने उन वीडियोस को लर्न किया होगा और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। हमारी इस वीडियो सीरीज का मकसद है कि हम इंजीनियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। सिविल इंजीनियरिंग के अलावा और भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियोस भी हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। So you are requested to please watch those videos as well and enhance your capacity। और बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपसे ये 10 क्वेश्चंस शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको लाइक करें, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें और CivTech Simplified को जरूर सब्सक्राइब करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 13 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 to 130। And question 121 says that waterlogging take place due to dash in groundwater table। Option A rise, option B is fall। waterlogging या सेम जो होती है वो जब भी आपका वाटर टेबल राइज करता है या इंक्रीज होता है उस एरिया में, वहां पे होती है और ये मेन रीजन है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 122 which of the following statement is wrong? Option A seepage drains reduce the chances of water logging। Option B water table generally follows the ground surface above it with a few exceptions। Option C at the water table the hydrostatic pressure is zero। Option D waterlogging makes the land more productive। So wrong answer is waterlogging makes the land more productive, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब जिस एरिया में वाटर लॉगिंग हो तो वो इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल और काबिल काश्त नहीं रहता वो रकबा। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी सारे जो है वो सीपेज ड्रेन्स के थ्रू वाटर लॉगिंग जो है वो रिड्यूस होती है। एरिया में अगर आप ड्रेन्स बनाएं तो वहां पे पानी जो है वो सीप करके इन्हीं ड्रेन्स के जरिए आप फिर लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू वहां से निकाल सकते। उसके अलावा वाटर टेबल जनरली फॉलोज द ग्राउंड सरफेस above it with few exceptions। So B, this is also correct। Or at water table hydrostatic pressure is also zero। So C is also correct। 123 the most economical section of lined canal is option A rectangular section with circular bottom for small discharges। Option B triangular section with circular bottom for small discharges। Option C trapezoidal section with round corner for higher discharge। Option D none of these। So B and C are the correct answer for this question। इकोनॉमिकल जो है वो या ट्रायंगुलर सेक्शन है विद सर्कुलर बॉटम या ट्रेपोजाइडल सेक्शन है विद राउंडेड कॉर्नर्स। 24 lining of canal is necessary। Option A to minimize the seepage losses in canal। Option B to prevent erosion of bed and sides due to high velocities। Option C to increase the discharge in canal section by increasing the velocity। And option D all of these। All these are the advantages of lining। lining इन्हीं चीजों की वजह से लाइनिंग ऑफ कैनाल नॉर्मली की जाती है। सीपेजेस ना हो, अगर लाइंड कैनाल होगी तो ऑफकोर्स सीपेजेस कम होंगे और अनलाइंड या अर्दन कैनाल में सीपेजेस ज्यादा होंगे। It also prevents the erosion of bed and sides due to high velocities of water। और it increases the discharge in the canal, क्योंकि सीपेज वगैरह उससे ऑफकोर्स नहीं होगी, सो इंक्रीज होगा डिस्चार्ज। 125 lining of a canal dash the maintenance of canal। Option A increases, option B decreases, option C does not affect। Of course the lining of canal decreases the maintenance cost of the canal। B is the correct answer for this question। 126 lining of a canal। Option A assures economical water distribution। Option B reduces possibility of breaching। Option C increases available head for power generation। Option D all of these। So all these are the advantages of lining। It ensures the economical distribution of water। और इसके अलावा ये ब्रीचिंग के खतरे को रिड्यूस करता है और पावर जनरेशन के लिए पानी भी ज्यादा मुहैया होता है कैनाल में। तो जो भी कैनाल्स आगे जाके रिजर्वायर में आती हैं या पावर जनरेशन प्लांट्स की तरफ मूव होती हैं, so those should be lined canal। 127 in a lined canal the resistance to flow decreases and velocity of flow increases। Option A is agree, option B is disagree। So yes, A is the correct answer। lined canal के अंदर
फ्लो की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज होती है। 128. The sodium carbonate lining consists of at least option A 6% sodium carbonate and 10% clay, option B 10% sodium carbonate and 6% clay, option C 1% sodium carbonate and 6% clay, option D 1% clay and 6% sodium carbonate. So A is the correct answer, which is 6% sodium carbonate and 10% clay. 129. For the repairing of an old but sound concrete lining, the lining preferred is option A shotcrete lining, option B precast concrete lining, option C soil cement lining, option D sodium carbonate lining. So A is the correct option. ऐसी लाइंड कैनाल जो साउंड कंक्रीट है, पहले से साउंड है, मतलब बेहतरीन उसकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी है, लेकिन उसके अंदर कहीं पे कुछ क्रैक्स आ गए हैं या कुछ पैनल्स उसके टूट गए हैं, टूट फूट का शिकार हैं, सो उनकी जब आपने रिपेयरिंग करनी है तो शॉर्ट क्रीटिंग के साथ आप करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 130. The weed growth in a canal leads to option A decrease in silting, option B decrease in discharge, increase in discharge, and option D increase in velocity of flow. So weed growth definitely decreases the discharge in a canal. So friends, this was part 13 of Irrigation Engineering Multiple Choice Questions, जिसमें हमने 10 MCQs आपके साथ शेयर किए। आई होप आपने इन क्वेश्चन से लर्निंग डेवलप की होगी। इन वीडियोस को लाइक करें, इनको अपनी कम्युनिटी और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और वो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में वेल प्रिपेयर्ड हों बिफोर अपेयरिंग इन दी एसएससी जेई और गेट एग्जाम। So let's meet again in the next video part, जिसमें हम further 10 questions आपके साथ शेयर करेंगे। Till then, take care of yourself. Thank you very much and have a good day.